पर violence को ही breed करेगा. Children who would grow up in the middle of war conflict zone are at a greater risk of developing challenging behaviors. There are about 40 conflicts which are currently active, and nearly 1% of the people in the world are refugees or displaced people. The conflict in Sri Lanka with Tamil Nadu was also the attack on ethnic minorities. Conflict in Myanmar and Rohingya is on Muslims, ethnic clash. Conflict in Kashmir is on political social grounds. Conflict in Afghanistan, conflict in Kuwait, conflicts in Iraq, in Libya, that have probably had different backgrounds when the people were being killed or people were made to be killed for different territorial reasons. लेकिन सफर इंडिविजुअली होगा. तो वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट क्या करता है? It creates atrocities, extrajudicial executions, torture, disappearances, sexual violation. But one thing it creates is generates terror. So once you have created a terror in these war conflict zones, then it causes a psychopathology. And what is that? That it maximizes this generation of terror all over the whole population. There is a young child, an adult, parent, they will be living in an environment which has got this blanket cover of terror going on. तो अब आपकी जो sense of achievement है, acknowledgement है, पढ़ाई है, relationships है, emotions सब बाद में है, because आप maximum control में, fear में, something may happen to you. Physical health problem तो होंगे, blood pressure, pulse, sugar, diabetes, लेकिन नींद नहीं आ सकती, भूख नहीं लग सकती, खौफ हो सकती. Many of these war regions, war is a factor which then causes these psychological variables in the daily lives and in the decision making of society. A lot of research that was done that it creates what they used to briefly पहले कहा करते थे concentration camp syndrome, फिर कहते थे survivor syndrome. This is the Nazis period. Then in like 60s, 70s, we started to call them the war neurosis. वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते थे, लोग थे, उनको anxiety रहती है, depression रहती है. जो soldiers veteran wars जाते थे, वापस आते थे, उनको भी symptoms होते. But I think one thing was common in all these things. We found that this is called post-traumatic stress disorder. This causes people to always fear something is going to go wrong. Okay, the secondary consequences of a war and conflict is going to affect family, social and economic life. और ये तीनों important predictors हैं psychological outcomes के कि आदमी की शख्सियत पे क्या change आने वाली. पर violence को ही breed करेगा. Children who would grow up in the middle of war conflict zone are at a greater risk of developing challenging behaviors. इस वायलेंस को बच्चे भी देख रहे थे. So they began to find out it's very strange. बाहर भी बम लग रहे हैं, अंदर भी लड़ाई. अब अंदर लड़ाई किसी वजह से भी हो सकती है, खाने पे हो सकती है, हमें यहाँ से चले जाने पे हो सकती है, हमारा फ्यूचर क्या हो सकती है. And basically they're becoming very violent, irritable, aggressive, losing hope, becoming very guilty, and feeling it was worthless to live. When you're in that state of the mind, you begin to ask your psyche, that as a survivor, मुझे क्या करना? So you got two options to do. Either you would become part of the aggressor, or you will try to flee. That's the psyche what Taliban's use for children. उनका जो mental state है ना, जिसकी वजह से वो फौजी बन के आते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं. उनको ये लगता है कि बचपन से जो बड़े करते हैं, उनकी एक खास किस्म की ब्रेन में ट्रेनिंग ये करवाई जाती है कि वो एक ऑपरेशन
जालिमाना निज़ाम की वजह से इस जगह पे पहुंचे हैं, और उन्हें वो निज़ाम से छुड़वाने का तरीका ये है कि क्योंकि सारी दुनिया रिलीजन को फॉलो नहीं करती और हमारे रिलीजन की इंसल्ट, इसके एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं एक्ल्टराइजेशन। कल्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लर्न बिहेवियर हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है। फैक्टर सबसे बड़ा ये नहीं था कि वहां उनके साथ क्या हुआ, उनको डिप्रेशन तो था मां, लेकिन उनको सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उनके पास सोशल सपोर्ट नहीं। किससे बात करते हैं वहां पे? उनके बहन भाई रिश्तेदार दोस्त उनसे बोलते थे। when they were asked to come as an asylum seekers, they didn't know who to talk to, what to talk to, language was an issue। तो ये भी एक शख्सियत का है दोहरापन। जब आपको हम अपने ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में अपनी तकलीफ से निकाल के डिस्प्लेस करके किसी दूसरी जगह लाते हैं, तो एक तो यही दुख के मैं सब कुछ छोड़ा है, और दूसरा दुख क्या तुम्हें बताऊं कैसे कि पीछे अब तुम तो मुश्किल हो मुझसे। ये जो लोग वहां पे रहते हैं, जो रह रहे थे, जो नहीं भागे, जिन्होंने जहाज में बैठने की कोशिश नहीं की, दे हैव ईदर सरेंडर्ड टू दैट बिकॉज देन यू बिकम एंड दैट अफेक्ट्स योर साइकी। उनको डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं रहती, फ्यूचर थिंकिंग नहीं कर पाते। इन वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन the psyche is getting affected, the mental disorders, because there are number of risk factors at various ecological levels: extreme poverty, lack of resources for health, breakdown of school systems, increased rates of family and the community violence। अगर किसी ने वायलेंस ब्रीड करके देख लिया हो, गोलियां, खून, धमाके, उनके लिए वायलेंस की ये जो पिक्चर है, सेंसिटाइजेशन माहौल से गुजर गई, डिसेंसिटाइजेशन। खून गिरा हुआ, गोलियां चलाना, ये सब कुछ बुरा नहीं लगता। जिसने नहीं देखा उसके लिए शॉक का ट्रॉमा। उसको शुरू में वायलेंस देखने या दिखाने के बाद एक्सक्यूज मिल गई हो, या उसको रीजंस मिल गए हो कि ये तो इसके लेजिटिमेट रीजंस थे, मैंने इसलिए देखा या किया, तो उसको उसकी चुभन नहीं होगी, उसको रुकने की जरूरत महसूस नहीं। और जब आप उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस भी आएगी। अब जब ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन खत्म हो गया, तो क्या अब उनमें ये जो लोग पैदा हुए, अब तो नहीं ना रोज बम गिरने वाले या कुछ होने, तो अब उन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अब जो बच्चे वहां पे 4 या 5 साल के हैं, उनको अगर ये नहीं मिलता, उनको स्कूल जाने की इजाजत है, बच्चों को पढ़ने की इजाजत है, झूले झूलने की इजाजत है, खौफ का पहलू नहीं है, उनकी शख्सियत में झूला झूलने वाली कैफियत कि वो जो मिसिंग फैक्टर वो नहीं पैदा होगा। एडिक्वेट हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं या केयर प्रोग्राम्स उनको कहते हैं, जो ट्रॉमाटाइज्ड कम्युनिटीज के अंदर जाना पड़ते हैं, वो सबसे पहले रिक्वायर करते हैं, जिन पे काम किया जाता है वो इंडिविजुअल और फैमिली लेवल अप्रोचेस होते हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो प्रोग्राम्स उन लोगों के साथ किए जाते हैं जिनके अंदर ये वायलेंस अब उनकी तमन्ना है कि इसको छोड़ दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन पहले इस चीज की होनी चाहिए कि जो थ्रेट है वो हटा दी जाए। फिर जो बेसिक रूट्स हैं डेवलपमेंट चाइल्ड के, या फैमिली फैब्रिक्स के, या फाइनेंशियल इनफ्लुएंस के, या सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के, जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। वो लोग जो सर्वाइवर्स होते हैं इन वॉर जोन्स के और मास वायलेंस के और टेररिज्म के, उनकी रिकवरी प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल implications, definite programming, lot of hard work, and a lot of multi-agencies should be involved.